नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद भव्या, जहां हम बनाएंगे फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और आसान. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In the previous class, we have discussed about the photoelectric effect and the various laws of photoelectric effect. Today, we are going to discuss about the Einstein's photoelectric equation. What is this? Actually, जो आइंस्टाइन है उन्होंने क्या किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, light, or we can say radiation, is made up of tiny particles which are called photons. ठीक है? So this was Planck's quantum theory, and the energy of each photon is given by E is equal to h nu. So what is Planck's quantum theory? According to Planck's quantum theory, radiation is made up of tiny particles or we can say the packets of energy. Which are called photons. And the energy of each photon is given by E is equal to h nu. What is h here? H is Planck's constant. Planck's constant. And nu is the frequency of radiation. And the value of Planck's constant is given by 6.63 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड. तो लाइट क्या है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलके बनी है, जिन्हें हम बोलते हैं फोटोन्स. और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E is equal to h nu. और अगर मैं बोलूं what is the momentum of photon, we can find it out as P is equal to एनर्जी का फॉर्मूला h nu. What is momentum? Energy upon velocity. And the velocity of photons will be the same as that of the velocity of light. So h nu upon c. This will be the momentum of photon. तो आइंस्टाइन ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि जब कोई फोटोन मेटल के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा और टकराने के बाद एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड इन टू वेज. तो यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन, मान लो ये मैंने कंसीडर कर लिया, दिस इज अ मेटल. Let the work function of this metal is phi naught. What is work function? We have already discussed in the previous lecture. And let this is given by h nu naught. Okay. So this is a work function. This is a metal, and let this is the incident radiation. And ये क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है. जब रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, then this electron will come out from the surface of the metal. This is the electron. Now this photon of energy, this photon has energy h nu. तो इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? h nu के इक्वल. तो अब आइंस्टाइन ने बोला that the energy of photon is used in two ways. One part of its energy is used to liberate the electron to overcome the work function. इट मीन्स ये एक पार्ट ऑफ जो एनर्जी का एक पार्ट है वो किस में यूज होगा? इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने में. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम जब इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालते हैं तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? इज दैट एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल. सो एक वे तो ये है
टू वेज में यूज होगी। एक वे में मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, तो कुछ पार्ट तो एनर्जी का वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाएगा, एंड जो बची हुई रिमेनिंग एनर्जी होगी दैट विल प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो वी कैन राइट that the energy of photon is used in two ways. The energy of photon incident on the metal is used in two ways. Number one, in providing the energy to overcome the work function, so that the electron will be liberated. And the other part of energy is used in providing the kinetic energy to the electrons. तो मैथमेटिकली इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमें पता है टोटल एनर्जी फोटोन की कितनी होती है, एच न्यू। दिस इज द टोटल एनर्जी। मैंने बोला एक पार्ट किस में यूज होगा, वर्क फंक्शन में यूज होगा, सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन लिबरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो लेट दिस इज प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। The maximum kinetic energy of the electron will depend upon the energy of the photon, and that energy will further depend upon the frequency of incident photon. Okay, so we can write it as phi naught plus maximum kinetic energy. Now we know that work function can be written as h nu naught, and what will be the formula for kinetic energy? Half mv square. Since the kinetic energy is maximum, so we can write it as 1 by 2 m v max square. Okay, so this is the required equation, and we can further write it as h nu is equal to h nu naught plus maximum kinetic energy. So what will be the value of maximum kinetic energy? This will be equal to h nu minus h nu naught. We can take h as common, so this will be nu minus nu naught. Here what is nu naught? Nu naught is the threshold frequency, and nu is the frequency of incident radiation, and this is the value of maximum kinetic energy. This is the required Einstein's photoelectric equation. We can explain the laws of photoelectric emission on the basis of this equation. So, what was the first law of photoelectric emission? We have already discussed in the previous class that the number of photoelectrons
emitted from the metal surface depends upon the number of photons which strikes the metal surface. It means we can say that photoelectric current will depend upon the intensity of the incident radiation and will not depend upon the frequency. Because we have already discussed that जब एक फोटोन मेटल से स्ट्राइक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर देंगे देन देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. Okay, so this was the first law of photoelectric emission. Number 2. Now, if the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency, so if I assume that this frequency nu of the incident photon is less than the threshold frequency, then kinetic energy of the photon will be negative, which is not possible. The photon, this is the maximum kinetic energy of photoelectron. Sorry. So if this value of nu is less than the threshold frequency, then we can say that the maximum kinetic energy of the photoelectron is negative, which is not possible. So in that case, the photoelectric emission will not take place. Number 3, if the frequency of incident photon is greater than this threshold frequency, then there will be some positive value of kinetic energy and which will depend upon the frequency of incident radiation. तो हमें पता है कि भाई अगर frequency of incident radiation threshold frequency से ज़्यादा है तो उसके पास कुछ kinetic energy होगी और वो kinetic energy directly हमें दिख रहा है किस पे depend कर रही है, frequency of incident radiation. अगर frequency ज़्यादा तो kinetic energy of electron ज़्यादा और अगर frequency कम तो kinetic energy of electrons will be less. So this was the third law of photoelectric emission. What was the fourth law? According to fourth law of photoelectric emission, this photoelectric emission is an instantaneous process. It means there is no time lag between the incidence of photon and the emission of photoelectron. So it is an instantaneous process. Now, हमने इस process को कैसा माना है? Completely elastic माना है. So there will be no time lag between the incidence of photon and the emission of electron. Okay, so we can say that this photoelectric emission is completely instantaneous process. This was the fourth law of photoelectric emission. Okay, so this was all about the laws of photoelectric emission and the photoelectric equation. Now we are going to derive the relation between the stopping potential and the frequency. What is stopping potential? Stopping potential is that value of potential, that value of negative potential, which is applied to the anode so that it can stop the electron with the maximum kinetic energy. हमने photoelectric effect में discuss किया था कि अगर हम collector plate को negative potential provide कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट हो रहे थे नाउ दे विल नॉट गो टू द कलेक्टर प्लेट. तो जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक मिनिमम वैल्यू उस नेगेटिव पोटेंशियल की जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर दे, दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी. Relation between stopping potential frequency. Now we know that what is electric potential? Potential is given as work done per unit charge. Work done per unit charge. In case of photoelectric emission, we can replace this work done by the maximum kinetic energy of photoelectrons. So what will be the required formula? V will be replaced by V naught, the stopping potential,
maximum kinetic energy upon what will be the charge? Charge will be equal to charge of the electron. So V naught is equal to maximum kinetic energy upon E. Or we can say that maximum kinetic energy is equal to E into V naught. Like this is equation number 1. We have already derived an expression for this kinetic energy, which is equal to H nu minus nu naught. Like this is equation number 2. The left hand side of both the equations are same. So we can equate these to EV naught is equal to H nu minus nu naught. So what will be the value of V naught? V naught will be equal to H nu upon E minus H nu naught upon E. So now let us compare this equation with the equation of a line. हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. अगर हम इसे इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करें तो क्या होगा? Here h upon e is representing the slope and this is the y intercept. Okay, so this is the equation of a straight line. So we can plot easily the graph between the stopping potential and the frequency. तो यहाँ पे y is equal to mx plus c टाइप की इक्वेशन बन रही है और यहाँ पे m यानी स्लोप की वैल्यू कितनी है? h upon e और जो y इंटरसेप्ट है that is equal to minus h nu naught upon e. Now let's plot the graph between these two quantities. हमारे पास स्लोप कैसी है? पॉजिटिव. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. और यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो कैसी है? नेगेटिव. y इंटरसेप्ट नेगेटिव है. सो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. माइनस h nu naught upon e. Or we can also write it as phi naught upon e minus phi naught upon e. Phi naught is work function obviously, and this is the threshold frequency. ठीक है, तो ये ग्राफ प्लॉट किया है हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में. स्लोप कैसी है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन बना दी. और जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट दिस इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू दिखा दी. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स. सो वी नो दैट रेडिएशन इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स which are called photons. So we are going to discuss about the properties of photons. So first property is the energy of photon. The energy of photon is given by h nu and its momentum is given by h nu upon c, where c is the velocity of radiation or the velocity of photon. Okay, तो energy of photon कितनी है? h nu और इसका momentum कितना है? h nu by c. Here we can clearly see that energy of photon depends directly upon frequency of incident radiation, but it is independent of intensity of incident radiation. Intensity, if we increase the intensity, it means we are increasing the number of photons, but the energy will depend upon the frequency of incident radiation.
and is completely independent of intensity. So this was the first property of photon. Second property is the photons emitted from the photons emitted from same source of radiation travel with the same speed. Travel with same speed, which will be equal to the speed of light, that is c. तो अगर photons same source से emit हो रहे हैं तो उनकी velocity भी क्या होगी, same. But if the photons are traveling in different media, then their velocity will also change. So the velocity of photons in different media will be different. In different media will be different due to change in their wavelength. Due to change in their wavelength. तो अलग अलग मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो क्या होता है, उसके लाइट की जो वेलोसिटी है, और वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ फोटोन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन देयर वेवलेंथ. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the photons are not deflected by electric and magnetic field, so we can say that photons are electrically neutral. The photons are not deflected by electric and magnetic fields, therefore photons are electrically neutral. और अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि भाई जो मास होता है ना वो सेम रहता है और वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी. हमें पता है कि वेट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय mg. तो हम बोलते हैं भाई मास तो किसी बॉडी का फिक्स है, बट जैसे जैसे g की वैल्यू चेंज होती है तो वेट चेंज होता है. बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ द बॉडी ऑल्सो चेंजेस when the velocity of the particle is comparable with the velocity of light. तो अगर कोई पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है, इट मीन्स अगर उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कंपेरेबल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसका मास फिक्स नहीं होगा, उसका मास चेंज होगा जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5. The rest mass of photon is 0. The rest mass of photon is 0. Now, according to theory of relativity, if a particle moves with the velocity comparable with the velocity of light, then its mass is given by the expression m is equal to m naught upon root 1 minus v square upon c square. Here m naught represents the rest mass of the particle, v represents the velocity of the particle, c is velocity of light, and m is the mass of the particle. So now in case of photon, we can write the rest mass m naught is equal to, ये यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, this is equal to m into root 1 minus v square upon c square. Now what is the velocity of photon? This is the same as the velocity of light,
So this will be equal to m into root 1 minus c square upon c square. So this will be equal to 0. So rest mass of the photon is 0. Now the next point is photon particle interaction. The energy and momentum both are conserved, but the number of photons are not conserved. जैसे ही फोटोन किसी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगी. इट मींस टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन. सिमिलरली वी कैन से that total momentum before collision will be equal to total momentum after collision, but the number of electrons may not be conserved because जब कोई फोटोन, जब कोई रेडिएशन किसी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक कर रही है तो वहां पे क्या होगा, फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकता है और एक न्यू फोटोन एमिट भी हो सकता है. सो वी कांट से दैट एनर्जी, दैट नंबर ऑफ फोटोन्स आर कंजर्व्ड. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इन photon particle interaction, energy and momentum are conserved, but the number of particles, or we can say the number of photons, may not be conserved. Okay, so this was the point number 6. So this was all about the properties of photons. Now we will discuss that how the wave theory can't explain this photoelectric emission. तो जो wave theory है ना, उसकी हेल्प से हम इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? हमें पता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, अगर हम किसी वेव की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं. और वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है. जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, बट नॉट ऑन द इंटेंसिटी. तो हम बोल सकते हैं कि जो वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रॉन्ग प्रूव हो रहा है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेव थ्योरी की वजह से तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर सकते. नंबर 2, सेकेंड लॉ क्या था कि देयर मस्ट बी अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना. अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी के फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हैं, देन देयर विल बी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन है, देन देयर विल बी नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एनर्जी तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे. वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इंटेंसिटी ऑफ वेव पे एनर्जी डिपेंड कर रही है. तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम फॉल करवा दें, देयर मस्ट बी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोवाइडेड दैट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज सफिशिएंट टू overcome the work function, or we can say is sufficient in providing the particular suitable energy to the electrons. तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल ही नहीं आया. इनके अकॉर्डिंग एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी. नाउ थर्ड वन इज दैट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. बट अगर हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो जो एनर्जी ऑफ वेव है ना, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट नहीं होगी. तो जब कोई वेव किसी मेटल से टकराएगी तो क्या होगा, तो जो उसकी एनर्जी है ना, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, एंड ड्यू टू विच देयर विल बी सम टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम टू accumulate that particular amount of energy so that the electron can come out from the surface of the metal. So it must not be an instantaneous process which is against the law of photoelectric emission. So we can say that this wave theory of light can't explain the photoelectric effect.
Okay, so this was all about the today's lecture, and the next topic we will discuss in our next class. Thank you.